हेलो गाइस। सो आपका फिर से स्वागत है स्प्रिंग बूट के ट्यूटोरियल के अंदर, जहां पर हमने बहुत कुछ किया था और अभी इस नए सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर हम रेस्ट एपीआई के साथ देखने वाले हैं कि क्या क्या होगा। सो स्प्रिंग बूट एपिसोड नंबर 3 विच इज अ रेस्ट एपीआई। इनसाइड दिस रेस्ट एपीआई दीज आर द बेसिक कंसेप्ट, बट आगे आगे आपको हाई लेवल के भी देखने को मिलेंगे। So let's what we are covered in the last session. So declare that mission accomplished. Your CRUD application is live. So configuration, MySQL database connectivity, created complete CRUD operation functionality, connected everything with the JSP front end. ये सब कुछ हमने लास्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट कर लिया था, जिसका मेरे यूट्यूब यानी चैनल पर के अंदर अवेलेबल है। सो आप वहां पर भी आप जाके विजिट करके देख सकते हो। सो ये क्रड ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके सीरीज के लिए हमने बहुत कुछ यहाँ पर देखा भी है। सो इट्स नॉट अ बिग डील आपके लिए। ओके। सो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज जो है हमारी, इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट अब कंप्लीट करने वाला है। सो लेट्स start with new Spring Boot episode number 3, which is a REST API. Inside this REST API, what is REST controller, what is gate mapping, what is post mapping, and what are the JSON formats are there. All these concepts are complete overview, which is very helpful for your interview and which is very helpful for your new journey in a Spring Boot. Because just like for example, when you connect with Angular or React application framework or libraries, at that time we don't use normal controller or we don't use JSP. JSP is a it's gone, यानी वो बहुत पुराना हो जाए, deprecated है. So right now the industry wants the person who know about the Angular, who know about the mm, React, who know about the Spring Boot application with the REST APIs. So what are the REST APIs, how they are working, and what is JSON format, why we are connected with the JSON format. All these concepts are completed in this series. Okay, we are बस आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है और जो भी मैं करूंगा उसको आपको साइमल्टेनियसली फॉलो करता है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा वक्त गवाए बिना हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज रेस्ट एपीआई, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट और सब क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज रेस्ट एपीआई। So REST means representational state transfer. Okay, representational state transfer is an architectural system. आपको दिखाता हूँ. Is an architectural system for building web services. A REST API allows different applications to communicate over HTTP using standard methods like GET, POST, PUT, and DELETE. दिस इज रेस्ट एपीआई. ओके। सो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर होती है जो कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और बिल्डिंग वेब सर्विसेज को हेल्प करेगी. रेस्ट एपीआई अलाउज डिफरेंट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट ओवर एचटीटीपी बाय यूजिंग एचटीटीपी व्हिच इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके बारे में आपको पता ही होगा. ओके. देयर आर सम सिनारियो जो कि किस तरह से वर्क होती है, आपको पता होना जरूरी है. एपीआई किस तरह से कॉल होगी, किस तरह से रिक्वेस्ट आती है. So here the client transfer the request और client बोलेगा गूगल पर जाके समथिंग लाइक www.google.com या फिर ब्राउजर पर जाके google.com, ये रिक्वेस्ट सेंड. Then client request application sends the HTTP request with the data. Okay, and the server processing. Spring Boot handles request and execute logic. जो कि हमने लॉजिक लिखा है उसका एग्जीक्यूट करेगा. एंड देन जेसन रिस्पॉन्स, सर्वर रिटर्न्स द स्ट्रक्चर्ड डेटा टू अ क्लाइंट. ओके, इट्स लाइक इट्स अ नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड डेटा को वो रिटर्न करेगा, नॉट अ प्रॉपर व्यू पेज. इट्स अ रिटर्न अ डेटा, नॉट अ व्यू पेज. जेएसपी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल जब जेएसपी के साथ हम कंट्रोलर को यूज करते हैं, कंट्रोलर इट सेंड्स द व्यू पेज, नॉट अ क्या कहते हैं, डेटा. डेटा भी सेंड करता है, साथ ही साथ व्यू पेज सेंड करता है,
जो कि सर्वर से बिलोंग कर रही है। मगर यहाँ पर हम सर्वर से बिलोंग नहीं करते, यहाँ पर सर्वर पर बोल रहे हैं कि हमें पेज नहीं चाहिए, मुझे बस डेटा चाहिए। ओके, why build REST APIs in a Spring Boot? Spring Boot provides a powerful production ready framework for creating RESTful web services with a minimal configuration. Here is that what makes it the go-to choice for API development. Okay, so let's lightweight and fast is there, automatic JSON, and then auto configurations are always there, and then microservices ready. Okay, microservices also support, perfect for building scalable and distributed system. अब माइक्रो सर्विसेज में नेक्स्ट सीरीज में लाऊंगा, जहां पर आपको माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, इवन स्मॉलेस्ट जानकारी जो कि माइक्रो सर्विसेज सबको लगता है बहुत डिफिकल्ट है। इफ यू नो अबाउट द स्प्रिंग बूट देन माइक्रो सर्विसेज इज नथिंग difficult. Okay, so understand REST controller. Okay, let's suppose I think you know about the building REST APIs and Spring Boot. You don't know about it, but actually हम किस तरह से build करने वाले वो देखने भी वाले हैं। And what is a REST API? If you want, then pause this video and note it down in your notebook, या फिर आपको बार बार repeatedly देखना पड़ेगा। So REST API is a representational state transfer in an architectural style for a building web services. Okay. So HTTP request को ये यूज किया जाएगा, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैथ, बहुत सारे इन सब को यूज किया जाता है। And then why build REST APIs? So it is a lightweight and fast है, automatic JSON है, then auto configuration है, microservices body भी ready हो जाता है। So इसके लिए हम Spring Boot का REST controller यूज कर रहे हैं। So understand what is REST controller. So you know about the controller, हमने उसके साथ बहुत प्रैक्टिस की है, और अब हम REST controller के बारे में आ रहे हैं। So the REST controller annotation is a specified version of @controller that the combines two powerful feature. देखो यहाँ पर दो combines powerful feature है, which are the handling HTTP request and automatically serializing return values to JSON. ये दोनों कॉम्बिनेशन है। सो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सो एलिमिनेट्स नीड फॉर रिस्पॉन्स बॉडी ऑन एवरी मेथड। ओके, सो this is the combination. So what is the response body? Response body is a returns the not a view, it returns the data in a JSON format. So we want the data in a JSON format, so it is possible by using response body. Single signals this class handles REST endpoint, simplifies RESTful services creation, and return data directly, not a view. Okay, ये return करेगा data, not a view. And then here is the some normal example. So here is the REST controller request mapping, for example APIs which we directly given to the class. Okay, which is benefit, क्यों benefit है मैं आपको बताऊंगा। So and then here we write it here as a get mapping and returns find all, यानी ये डेटा पूरा रिटर्न करेगा। This single annotation does work of @controller plus response body. If you want to use without REST controller, you can also use by using two controller @controller, simultaneously you use @response body. So response body means the data, it's not return a view page, it's returns a data. Okay, so response body के बारे में भी आपको पता चल गया। So what is HTTP? So HTTP hypertext transfer protocol, here is the gate mapping, retrieving the data. So how it's the working and why, when to use, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली सेशन में देखेंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या देखने वाले। सो @post mapping, सेंडिंग द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, हमें सेंड करना है। सो एट दैट टाइम we can use post mapping, and after that here is the how JSON response works.
So Java object create Jackson conversion and then HTTP response. जावा ऑब्जेक्ट किस तरह से होते हैं और जेसन में उसको किस तरह से कन्वर्जन मिलती है वो सब कुछ हम देखने वाले हैं. सो क्रिएट योर फर्स्ट रेस्ट एपीआई, क्रिएट controller class, add rest controller to that, and then add get method, runs test, and test करने के लिए आप इसको कहीं पर भी आप देख सकते हो, इवन इवन इन योर ओन ब्राउजर आल्सो. ओके, और उसके अलावा हम देखेंगे कि वहां पर आप कहाँ पर टेस्ट कर सकते हो. So testing your REST API. So testing is a crucial for validating your API endpoint. So which is very important. REST API testing करने के लिए Spring Boot REST API can be tested using various tools, each offering unique benefits for a development. So here is the Postman, web browser, and URL command. Okay, so here all these are the best methods. You best UI कह सकते हो. So Postman, which we are using right now for a testing purpose. So industry standard API testing tool with the intuitive, intuitive GUI, collections, management, and automated testing compatibility. Okay. Then web browser, quick testing for a GET request by simply entering the URL in your browser address bar. Not for other purpose, only for GET purpose. And then URL command, powerful command line tool for testing HTTP methods with the headers and request bodies. Okay. So हम वो नहीं देखने वाले, हम we are using Postman. So ये सब कुछ ब्राउजर के अंदर का भी और URL के अंदर के भी सब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे. Example postman request, for example method get, and you can write here like this, and then header content if there is a available, if not then there is no need. Okay, so आपको ये इस तरह से डेटा मिलेगा. चलो हम देखने ही वाले हैं. Then summary, what's the next, the देखते हैं और कुछ है क्या. सो कमिंग अप इन नेक्स्ट एपिसोड विच इज फोर पाथ वेरिएबल्स एंड वो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले. सो ओवरऑल मैंने यहाँ पर ओवरव्यू दे दी थी हमने क्या करने वाले हैं. सो हम इस न्यू सीरीज के अंदर रेस्ट एपीआई बेसिक्स के अंदर ये सब कुछ पार्ट कवर करने वाले हैं. सो देरी के बिना हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो ये यहाँ पर ओवरव्यू खत्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरह से बिल्ड किया जाए बाय यूजिंग रेस्ट एपीआईज. सो प्रैक्टिकल सेशन के अंदर मिलता है. सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय. और इस वीडियो के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना. जिसको भी जरूरत है उसको ये वीडियो बेनिफिट होगा, जहां पर हम स्क्रैच से लेकर खुद से किस तरह से कोड किया जाए वो पार्ट करने वाले, क्योंकि इंडस्ट्री राइट नाउ वांट्स द प्रोग्रामर हु यूजिंग एआई विद देयर ओन कोड. ओके, उसे कोड समझना भी आना चाहिए और एआई को भी यूज करना आना चाहिए और खुद से कोड लिखना भी आना चाहिए. ये सब कुछ पार्ट अगर जिस कैंडिडेट के अंदर है उसको कंपनी डायरेक्ट हायर करती है. सो मेक श्योर यू कैन यूज योर ब्रेन एंड आल्सो एआई टूल. ओके, सो सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल सेशंस. सो सी यू, टाटा बाय बाय.